Hi everyone, my name is Kinjal. Welcome again to my channel KShahzLearning. आज हम एक बहुत important topic discuss करने वाले हैं. So before we start, I would like to thank you all for watching this video in advance, and we are going to watch a very important topic, which is not only important for us to live a good life, but also for our self growth. It is nothing but the art of saying no. Now you would be thinking, art of saying no, ज़रूरत क्या है, क्यों करना है, किसी को मना ही करना ही क्यों है, राइट? बट वी ऑल नो दैट कभी ना कभी कहीं ना कहीं वी ऑल हैव फेस सच सिचुएशंस जहाँ पे हमें मना करना था. वी वर एक्चुअली नॉट एबल टू कम अप टू दैट एक्सपेक्टेशंस. हमको वो करना ही नहीं था वो काम, राइट? बट फिर भी हमने मना नहीं किया. Possibly we got stuck, possibly we were not able to say no in a better way. शायद हम समझा ही नहीं पाए या कुछ बोल ही नहीं पाए, right? So let's learn. Saying no isn't about declining request. It's about setting the boundaries, right? You are setting the right boundaries कि कहाँ पे कितना तक आपको जाना है, कितना आगे जाना है, या कहाँ पे you have to draw the line, right? Preserving our time and energy, and ultimately empowering ourselves to live authentically. So let's grab your favorite cozy spot, the drink that you would like to have, and let's explore this together. Now, first things first, why is saying no so much challenging for all of us? कभी सोचा है कि हम किसी को मना क्यों नहीं कर पाते, right? It's very important for us to learn saying no. या ऑफ कोर्स आई नो सोसाइटी को वही लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, प्लीजिंग लगते हैं, जो हमेशा येस बोलते हैं. मेरा इतना काम कर देना, या श्योर. इतने बजे मुझे पिक कर लेना, या श्योर. यहाँ पे जाना, वहाँ पे जाना, ये कर लेना, वो कर लेना, एंड यू आर सेइंग येस टू एवरीथिंग. बहुत अच्छी बात है, यू शुड डू इट. बट कभी सोचा है दैट डूइंग ऑल दीज थिंग्स, इतना ज़्यादा दूर जाना, स्ट्रेचिंग योर सेल्फ इवन इफ़ यू आर नॉट इन दैट कंडीशन टू, क्या होगा उससे? कोई नुकसान है क्या उसका? यू से येस ऑल द टाइम, दिस कैन लीड टू बर्न आउट, रिसेंटमेंट एंड लॉस ऑफ सेल्फ. आपको एक टाइम आएगा जब लगेगा दैट यार व्हाट एम आई डूइंग. एक अनहैप्पीनेस फील होगा, राइट? एंड टू स्टॉप दिस वी हैव टू स्टार्ट सेइंग no. We find ourselves stretched thin, unable to prioritize our own needs and afraid of disappointing others. मैं खुद की बात करूँ, कुछ साल पहले I used to say yes to everything. हमेशा बेटा ये कर देना, बहू ये कर देना, मामी ये कर देना, चाची ये कर देना, राइट? दीदी ये कर देना, मैम ये कर देना, बॉस कहता है ये कर देना, उनका बॉस कहता है वो कर देना, हर कोई चीज़ कर ली, राइट? शिफ्ट 7 बजे ख़त्म होता है, ऐसा कोई काम दे दिया जो 8 बजे तक 9 बजे तक चलेगा, हाँ बोल दिया. मना करूँगी, क्या पता शायद बुरा लग जाए किसी को. बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं और हम काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस के बारे में भी सोचते हैं. दैट अगर किसी को मना कर दिया उनको कैसा लगेगा, कल को ये हो गया, कल को वो हो गया, क्या करेंगे? बॉस का एग्जाम्पल दे, अप्रेजल में यार उनको बुरा लग गया, उन्होंने सही ढंग से अप्रेजल नहीं किया तो सैलरी नहीं बढ़ेगी. किसी और के बारे में बात करें, घर में मना कर दिया, घर के लोगों को बुरा लग जाएगा, मम्मी पापा, सास ससुर, चाचा चाची, मामा मामी, सबको बुरा लग जाएगा. क्यों? आपने मना कर दिया. मुझे काम था, मंदिर जाना था, बट किसी ने मुझे बोल दिया सब्ज़ी लेकर जाना, मंदिर नहीं जा पाई. ओके, इट्स नॉट दैट आई एम दैट मंदिर पर्सन, ऐसा भी नहीं है कि नास्तिक हूँ. ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट कई बार ऐसा होगा जहाँ पे हम बस हाँ बोलते जाएंगे, बट दैट विल ओनली अल्टीमेटली लीड टू आवर ओन प्रॉब्लम, राइट? एक वक्त आएगा जब आपको खुद को डिससेटिस्फाइड फील होगा, राइट? So the way I said, yes, I admit I used to be a chronic people pleaser some point in time, right? Saying yes to everything left me feeling exhausted and unfulfilled.
I wasn't until I realized the power of saying no that I reclaimed control over my life. I know, थोड़ा सा भारी हो गया ना. So what I'm trying to say is that जब तक आप ये बोझ अपने आप से नहीं उतारोगे, that मुझे हर किसी को हाँ ही बोलना है, राइट, देयर विल बी अ टाइम जब आपको बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील होगा, आपको लगेगा मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जी रही हूँ, राइट. सो stop it, take a pause. I'm not saying that say no to everything that someone tells you. Your mama is telling बेटा आते वक्त ये कर लेना, and you're like no, I will do it. So I'm not saying that हर किसी टाइम पे आप हर किसी को मना ही कर दो. What I'm trying to say here is that you should know when to prioritize yourself and learn to say no to others. Right? सोचिए. Okay, so now let's learn that how do we actually master the art of saying no. The first thing, tip number 1, prioritize. Understand what truly matters to you and makes it easier for you to, make yourself comfortable in saying no. Prioritization, right? So here is how you prioritize your task, right? There is a quadrant which you need to follow, right? Urgent, not urgent, and important, not important task, right? You have to prioritize your thing. देख लो अभी क्या ज़रूरी है, क्या एकदम अर्जेंट है. यू हैव टू प्रायोरिटाइज. एक लिस्ट बना लो दैट ओके XYZ इज़ टू बी डन, राइट. आप एक लिस्ट बना सकते हो, आप वो क्वाड्रेंट फॉलो कर सकते हो विच आई हैव शोन यू जस्ट अ वाइल अगो, राइट. तो आप दोनों में से कोई भी एक टू डू लिस्ट बना सकते हो, आप क्वाड्रेंट फॉलो कर सकते हो अर्जेंट इंपॉर्टेंट वाला, एंड depending on that you should decide whether you should be saying yes to it or whether you should be saying a no to it. Yeah. Tip number 2, practice assertiveness, right? You should know that किसी को अच्छी तरीके से with confidence and with grace how can you say no. मान लो बॉस ने बोला that 7 बजे शिफ्ट ख़त्म हो रहा है, बॉस ने बोला 2 घंटे का ही काम है यार कर लो, इट्स ऑलरेडी 6 o'clock. कैसे करोगे मना? सर सॉरी, शिफ्ट तो 7 बजे ख़त्म हो रही है, 6 बज गए, 1 घंटे का काम हो सकता है, बाकी का 1 घंटे का कल कर लूँगा या कल कर लूँगी. कैन यू से दैट? ऑफ कोर्स येस, यू कैन से दैट, बट वुड इट बी ग्रेसफुल? वुड इट साउंड पॉजिटिव? नो. सो यू नीड टू साउंड असर्टिव. बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. यू कैन डेवलप योर ओन वे ऑफ असर्टिवनेस. इन फ्यूचर आई वुड बी रोलिंग आउट वीडियोज़ ऑन असर्टिवनेस. कई और सारे भी आपको मिल सकते हैं. यू कैन ऑलवेज गूगल एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ असर्टिवनेस एंड एवरीथिंग. यू वुड बी एबल टू लर्न मोर अबाउट इट. हाउएवर येस, मैं तो हूँ ही, आप हमेशा यू कैन कनेक्ट विथ मी एंड आई कैन हेल्प यू विथ द सेम. Okay, anyway, so assertiveness, what I was trying to say you is that when your boss is saying that आप stretch कर लो थोड़ा, I know 2 घंटे का काम है, but ठीक है ना, 8 बजे चले जाना यार, right? Once in a while I guess it should be fine, but what if this is a daily task which is happening, right? आपको रोज़ ही बोला जा रहा है just because you never say no, राइट. तो आप इस चीज़ को कैसे डेवलप करोगे? व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू लर्न टू बी असर्टिव. असर्टिवनेस क्या होता है? द वे आई सेड, पॉजिटिव तरीके से ग्रेसफुल लगे उस तरीके से मना करना है. जस्ट वन एग्जाम्पल आई बी शेयरिंग. जैसे अगर मैं हूँ और मेरे बॉस ने मुझे ये बोला है तो मैं इसको किस तरीके से बोलूँगी. सो द वे आई वाज सेइंग, इफ़ आई वाज एट योर प्लेस, जस्ट एज एन एग्जाम्पल आई वुड से समथिंग लाइक, दिस इज़ नॉट द ओनली वे दो, आप अपना तरीका यूज़ कर सकते हो. दैट या आई गॉट अ पॉइंट दैट दिस टास्क इज़ टू बी डन एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल. However, this being a last moment thing, I would not be able to do it today, but tomorrow as soon as I come to office, I'll be doing it. Maybe your boss might be upset. He would say that this is like a priority that needs to be closed. तब अपना priority you can tell in a very assertive way that yeah, I understand but I have a doctor's appointment, या फिर अपने घर वालों का या किसी से example you have it, बता दो. Maybe even if it's a simple thing that you cannot stretch today due to some personal commitment, बता दो यार that due to some personal commitment today I would not be able to extend. However, tomorrow on priority basis I'll close the requirement. So this can be done. Yeah.
but sound assertive. It should be graceful. ऐसा ना लगे that you are shouting at them, or you are trying to be dominant or being rude to them. That should not be there. Yeah. The third tip that we are going to discuss is offering alternatives. Let's take an example that आपके दोस्त ने बोला that let's meet for dinner at XYZ restaurant, जो आपके घर से 15-20 किलोमीटर दूर है. Now today it is not possible for you. आपको नहीं पता था before you told that we can meet up for the dinner. इतना दूर का रेस्टोरेंट सजेशन में आएगा वो नहीं पता था. Let's assume यहाँ पे rather than saying straightforward no, that नहीं मैं नहीं आ सकता, I cannot come because it's like 15-20 kilometers far, right? Don't make it a dead end. If it is feasible for you to give an option here, try to give an alternative. Like 10-15 किलोमीटर या 15-20 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते, find something which is like a win-win situation for you and your friend both, जो बीच में पड़ता है, जो दोनों को अच्छा लगता है. So alternative offer करो rather than just saying a no, right? One more example I would like to give that for example, if you can't commit to a project, suggest someone else who might be available. ये professional वाला example हो गया. That someone else who have a different capability and capacity to close the project for you. Alternative दे दो. आपका कोई colleague है, उसी तरीके से जैसे in the previous example जहाँ पे boss extend करने को बोल रहा था, if someone else is possible, if for someone else it's possible to extend for that day, tell them, right? Alternative can be given, but yes, not in a way that वो बंदे को stretch करना पड़े just because you said a no. Not in that way, of course. You have to be considerate for others too. Okay, so tip number 4, do not have a guilt in yourself when you say no to someone, right? Normally it happens that whenever you are saying a no, it accompanies together with a guilt that, oh my god, I said no to someone really close, or maybe a boss or a colleague or someone, right? So don't get your guilt with you when you say no to someone, right? There is nothing wrong in saying no. Every time saying no is wrong, but depending on the situation, if you are saying no, there's nothing wrong, right? Please understand that it is important to prioritize yourself, right? You are important too. You need to understand this, right? So remind yourself that saying no is not selfish at all. At all. You're not selfish just because you are saying no. It's an act of self-care, right? You deserve to honor your own needs and limitations. जो नहीं हो सकता नहीं हो सकता है. That's fine. मना कर दो. It's not in your capacity. You cannot do that, right? मान लो किसी ने बोला that ये 5 किलो का बैग उठाकर प्लीज़ वहाँ पे रख दो. Maybe you are having a slip disc or something and you are like, okay ठीक है रख देता हूँ. No, it's not in a physical capacity. Say a no. That's okay. Maybe आज जो अभी ये हालत हुई है, maybe it was just because you never said no to someone when you actually required to, right? So I'm just giving a hypothetical situation कि ऐसा हो सकता है. So please understand and do act accordingly. Now we are going to sum it up. Okay, so let's recap. Knowing your priorities, practicing assertiveness, offering alternatives, and letting go of your guilt are key steps in mastering the art of saying no. So by setting boundaries and honoring our own needs, we not only empower ourselves, okay, but also cultivate healthier relationships built on authenticity and mutual respect, right? जब आप open up करते हो with the honesty that अभी नहीं कर पाऊँगा या अभी नहीं कर पाऊँगी, it is only going to strengthen your relationship with the other person, right? So please do not be taken aback that you are saying no. So understand these points that we have discussed, and I really hope that this is going to help you build a better yourself, right? So thank you for joining me on this journey. Remember, it's okay to say no. Take care of yourself, and until next time, stay empowered.
Okay, so do connect with us for any training queries regarding soft skills, behavioral trainings, or personality development. We also provide content development, which is customized as per the client requirements. So you can always DM us. And yeah. Oh yes, if you like this video, please press the like button and subscribe to our channel. Also follow us on Facebook and Instagram. My handle is same, KShahzLearning, and link is also available in the bio. So thank you so much. Take care. Bye bye.